So let's first see, why do we do a peripheral blood smear examination? Why are we making a smear of the blood and looking at it under the microscope? So it is anemia, any abnormalities in the RBCs, platelet morphology abnormalities, as well count abnormalities like thrombocytopenia or thrombocytosis, but we can also have giant platelets. Then we have leukemia, WBC abnormalities, which are not just counts but also morphologically. And then infections, all your blood parasites like malaria, microfilaria, and then inclusions like basophilic stippling, Howell-Jolly bodies, etc. After discussing the why of this, now we are going to see the how of it. Under a typical microscope that we use, we have 10x, 40x and 100x. So 10x is considered as your low power, high power is considered your 40x, and then we have the oil immersion. At 10x or low power, you're seeing the quality of the smear, if it's an adequate smear, and we also want to see the approximate number of WBC and platelets. We don't count it on this power usually, but we want to establish if it is more towards the normal side or abnormal side. So for example, if a patient has leukemia and the number of WBCs is extremely high, you will be able to tell at low power. Or if the number of platelets is too less or too high, or clumps are seen, that you can see on the low power. So we can see rouleau formation as well as clumps, and leukocyte clumps or platelet clumps, both you can see on low power. And another thing that is done at low power is we want to see a perfect area where we are going to look at under the high power. An optimal area for evaluation at high power is also chosen, because we want a portion of the smear which does not have any artifacts, and RBCs are at least a little bit separated from each other, and they're not overlapping, but they're not too far apart also. And then you go to the 40x lens, and then you go to the oil immersion, which is 100x lens, to study the area of the morphology. And to count the differentials of WBCs, you choose at least 100 WBCs. We have a cell counter on which we do it, like the manual counter. And then of course you give the GBP, which is your general blood picture, in which you give the abnormal morphology or whatever morphology you see of RBCs, WBCs or platelets. It may be normal, it may be abnormal. You'll comment on that as well. Now this is just a picture of where we see what a slide is. So usually in the frosted area there is like a slip, the number slip to recognize the patient's identification number. Then we have the head of the smear, the body of the smear, and the tail of the smear. Examine the cells under the towards the tail side, but not towards extreme end. This is just a brief picture of what your normal peripheral blood smear looks like. RBCs are very well separated from each other. We see one lymphocyte, one neutrophil, and we also see platelets. Now this is an area too thin to examine the slide. They are too much separated from each other. There are no WBCs in this picture. This is an area where the RBCs are far too clumped on each other for us to be able to comment on their morphology or even now coming to BBS evaluation, we want to look for what is the situation with, we want to see what is the situation with RBCs, WBCs, platelets, and if at all there are any parasites. Now coming to RBCs, what are RBCs? We know that they are biconcave discs. Basically, if you look at this picture lower down, they're also known as discocytes because of that. The diameter is 6 to 8.5 micron meter. 7.5 or 7.4 can also be considered. It is approximately the same size of the nucleus of the small lymphocyte. So that is an important thing to remember, that the diameter of the RBC is same as that of the diameter of the nucleus of the small lymphocyte, not the small lymphocyte itself, the nucleus of the small lymphocyte. We will come to discuss it when we come to anemia. And then it's stained deep pink like the eosin component at the periphery, and pale in the center. So there is a pallor in the center. The central pallor, again, it has importance because it has to occupy 1/3 of the total size. It should have more than that, because then the cell will that indicates anemia. Time there is a variation in size of the RBCs, it is called anisocytosis. All right, and then what is the parameter which tells us about the size of the RBC? It is your MCV, mean cell volume. This is given by your automatic blood analyzer, automatic hemat analyzer. It gives you MCV, MCH, all those parameters. So normal MCV is considered 80 to 100 femtoliters, and if it is less than 80, it is considered to be microcyte. So any time your MCV is 70s, it's probably
microcyte, but you also have to relate it to hemoglobin content, and macrocytes more than 100 femtoliters. And cytosis and isocytosis is a feature of most of anemias. And again, anytime you are giving any type of anemia, microcytic, macrocytic, dimorphic, etc., or even normocytic, you have to first make a slide and then give the GBP. Microcyte size of the RBC is reduced less than 80 femtoliter, seen when hemoglobin synthesis is defective. So the classic disease we have is the iron deficiency anemia. We have microcytic hypochromic anemia, then the anemia of chronic disease as well, and sideroblastic anemia and thalassemia. So this is basically SITA. We have, if you remember, SITA-MA was a short form, a mnemonic for the differential diagnosis of microcytic hypochromic anemia. But primarily it is SITA, sideroblastic anemia, iron deficiency anemia, thalassemia, and anemia of chronic disease. Very important PG question as well, neat PG question. Now look at this picture. You can tell we have one lymphocyte right on top. The दो WBC दिख रहे हैं, ऊपर वाला is lymphocyte. If you compare the nucleus of the small lymphocyte, this is a small lymphocyte. If you say the nucleus, it is much larger than the surrounding RBCs. So this is microcytic. So it is not just MCV that you're relying on, but you also correlate it with PBS. Okay. Now coming to macrocytes. So whenever MCV of the RBCs is increased more than 100 femtoliters, that is considered to be macrocytes. Now macrocytes can be macroovalocytes or they can be round macrocytes as well. So macrocytes, ovalocytes, when they become oval and large, they are macroovalocytes, and when they retain their round shape, that is round macrocytes. Macrovalocytes are seen classically in megaloblastic anemia. So we know macrocytic anemia is correlated with megaloblastic anemia. If you look at this picture, if you look at the RBCs which are bigger than we have a lymphocyte at the bottom. The RBCs are bigger, right? And it looks as if the hemoglobin content has increased. But remember, there is no such thing as macrocytic hyperchromic anemia. It is macrocytic normochromic anemia only, because the increase in volume of the cell is being is the reason why the pallor is being covered. Okay, so it is not because there is increase in hemoglobin. It is only increase in the size of the cell. So it is given macrocytic normochromic. Megaloblastic anemia, then we have myelodysplastic syndromes and treatment with some hydroxycarbamide or zerovidin. Round microcytes are also seen in liver disease and alcoholism and hypothyroidism. This you have to remember, that non-megaloblastic causes of macrocytes. Okay, so it is liver disease and alcoholism. Classically, you have to remember, even in hypothyroidism patients, liver disease, alcoholism and hypothyroidism. Along with that, myelodysplastic syndrome and drugs. Okay, now coming to abnormal hemoglobin content. So color of the RBCs is because of the hemoglobin, right? So let's see. So color of the RBCs is determined by hemoglobin content. Mean cell hemoglobin, which is MCH, gives a measure of the average amount of the hemoglobin in RBCs. So normal MCH is 27 to 32 picograms, and normal hemoconcentration is in males 150 plus minus 20 gram per liter, female 135 plus minus 15 gram per liter. Now coming to another thing which defines the concentration of hemoglobin is MCHC, which is your mean cell hemoglobin concentration. It refers to the concentration of hemoglobin in 1 liter or 1 deciliter of packed RBCs. So normal range is 32 to 36%. And that is your normochromic. If it is less than 32%, it is considered hypochromic, and more than 36% is considered hyperchromic. Now hypochromic, that means there is decrease in the hemoglobin content of the RBCs. If you see at the RBCs in this picture, they are unusually pale, and the central pallor is much more than 1/3, and sometimes they're also called as ring forms. So if you look at these RBCs, the pallor has increased so much, there's only a rim of hemoglobin left, right, at the periphery. So these are called ring forms of iron deficiency anemia as well. So the decrease of in hypochromic RBCs, MCH and MCHC both have decreased, and the classic is your, again, SITA. MCH, SITA, which is your DD of microcytic hypochromic anemia, sideroblastic iron deficiency anemia, thalassemia, and anemia of chronic disease. So microcytic hypochromic kind of go hand in hand. Now coming to hyperchromic, these are red cells which stain deeply, which have less or absent central pallor. So it can be megaloblastic anemia and hereditary spherocytosis. So in megaloblastic anemia, MCH is increased and MCHC is normal. So that is why it is macrocytic
normochromic. In hereditary anemia, MCH is normal, but MCHC has increased, which has like spherocytes. Two conditions where you will see hypochromic RBCs, but in hereditary spherocytes, your RBCs will be characteristically round, like all of them will be round. Like in megaloblastic picture, at least some of the RBCs have some central pallor, but in spherocytes, usually most, like there's a loss of central pallor and they're spherical. Now coming to dimorphic anemia. Now this is very important. It is also known as anisochromia. So in dimorphic anemia, there are two distinct populations of RBCs in the same smear. Dimorphic, so there's two types, right? Example is whenever you have hypochromic as well as normochromic RBCs are seen in sideroblastic anemia, or maybe after iron therapy for IDA, or after blood transfusion in a patient of hypochromic anemia. So in all of these, iron therapy or blood transfusion, the anemia is being corrected by blood or the iron therapy. So normochromic RBCs have also come in the picture, but sideroblastic usually just have dimorphic anemia. So this is a dimorphic picture. If you look at these, you have those characteristic ring form, chote wale hypochromic RBCs, but then you also have normocytic RBCs. Now coming to the abnormal shape. Now we'll see many types of abnormal shapes of RBCs. The variation in shape of RBCs is known as poikilocytosis. It is of various types: elliptocytes, spherocytes, target cells, schistocytes, acanthocytes, echinocytes, keratocytes, leptocytes, stomatocytes, sickle cells, and teardrops. Let's go about these one by one. Elliptocytes are elliptical, नाम में ही और rod like. If you look at this picture, you can see elliptocytes. Yeah, they are seen in hereditary elliptocytosis. जैसे hereditary spherocytosis होता है, वैसे hereditary elliptocytosis होता है. But they might be seen in IDA, thalassemia, megaloblastic, and myelodysplastic syndromes as well. But classically in hereditary elliptocytosis. When it comes to iron deficiency anemia, thalassemia, and megaloblastic anemia, depending on how worse the anemia is, various type of anisopoikilocytosis can happen. Like many types of abnormal shapes can be seen. Okay, so that is why ये वाली abnormal shape भी इनमें आ जाती है. Spherocytes are spherical in diameter. Here if you see, most of the RBCs are spherical in diameter. Diameter is smaller than the normal ones though, and they stain intensely. They do not have a central area of pallor. So classically they are seen in hereditary spherocytosis, but important differentials are autoimmune diseases. One is your autoimmune hemolytic anemia, another is your hemolytic disease of the newborn. These are important differentials. To target cells or codocytes, or they are also known as Mexican hat cells. So if you look at this picture, so there is a central area. Usually we have central pallor, but here there is a central area of hemoglobinization. There is a central stained area. There is a rimming of like unstained cytoplasm. And then on the outside, the peripheral rim has hemoglobin. So there is hemoglobin on the periphery, फिर खाली area और center में फिर hemoglobin की एक central concentration है. So these cells usually have increased surface to volume ratio, and this is seen in hemoglobinopathies mostly. Classically हमें पता है थैलेसीमिया में मिलते टारगेट सेल, बट लिवर डिजीज में या दूसरी hemoglobinopathies में भी मिल सकते हैं, और पोस्ट स्प्लेनेक्टमी पेशेंट्स में भी मिल सकते हैं. So the importance of these is कि obviously classic वाले तो you must all remember कि ये वाले इसमें मिलते हैं, ये वाले इसमें मिलते हैं, but you also have to remember the DDs. Now coming to schistocytes. We have helmet cells, also called as fragmented cells. Basically, whenever there is some form of trauma to the cells, right, they can be present in various shapes like helmet cells, comma cells, triangle cells. If you look at this picture, they are smaller than the normal RBCs, obviously, and they are seen in microangiopathic hemolytic anemias, MAHAs. ठीक है, and किसमें होता है DIC, TTP, HUS, and HELP syndrome, and macroangiopathic hemolytic anemias जो कि cardiac valve processes में होते हैं, and Burns patient में भी fragmented RBCs मिल जाते हैं. Now coming to acanthocytes or SPUR cells. These are thorny projections on red cell membrane. These are coarse. They are coarse का मतलब blunt tipped हैं, and there is variation in size of all those. If you look at this picture, हर स्पर की सेम साइज और शेप नहीं है, हर स्पर अलग अलग है एक दूसरे से, एंड एट वेरिएबल डिस्टेंस. कुछ दो स्पर एक मतलब अगर आप किसी भी सेंटर वाले, बिल्कुल सेंट्रल वाले में अगर देखेंगे तो कुछ स्पर उस पर बहुत दूर दूर हैं और कुछ स्पर उसके पास पास हैं. तो देयर इज वेरिएशन. सो दिस इज acanthocyte, and they are seen in liver disease and A beta lipoproteinemia. A beta lipoproteinemia और acanthocyte classic coloration है, बट ऑल्सो अगेन लिवर डिजीज या मैक्लोइड फिनोटाइप या पोस्ट स्प्लेनेक्टमी पेशेंट्स में भी दिख सकते हैं.
नाउ इसका भाई बंधु ही है इकाइनोसाइट, जिसे हम बर सेल बोलते हैं। इसकी उसके कंपैरिजन में जो प्रोजेक्शंस है स्मॉल हैं, उससे ज़्यादा हैं, बट इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर, द वन दैट आई एम पॉइंटिंग टू, दे आर ऑल एट इक्वल डिस्टेंसेस। इफ़ यू सी एट देम, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूर दूर है, एक ही सेल पे कुछ दूर दूर है प्रोजेक्शंस और कुछ पास पास हैं। इसकी जो प्रोजेक्शंस है छोटी हैं, न्यूमरस हैं एंड एट इक्वल डिस्टेंस। ओके, दे कैन अकर एज एन आर्टिफैक्ट ऑल्सो EDTA चेंजेस। इफ़ यू have read your Kothalkar का first or second chapter, you must have read what are EDTA changes. So this is a common EDTA changes का artifact, but classic correlation एक आइनोसाइट की होती है यूरीमिया से, chronic renal failure में, and premature infants after blood transfusion में भी ये मिल सकता है। Now coming to keratocytes, so नाम में ही है कि स्पिक्यूल इसमें मिल सकते हैं, अदर 1 or 2 पेयर, एंड डैमेज, मैकेनिकल डैमेज हुआ है जब RBCs को तभी होता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइंस बॉडी बाय द पिटिंग एक्शन ऑफ स्प्लीन, तब मिल सकते हैं केराटोसाइट्स। देन वी हैव लेप्टोसाइट्स, दीज आर थिन रेड सेल्स जिनमें लार्ज अनस्टेन्ड सेंट्रल एरियाज, इफ यू सी द सेल्स दैट आर मार्क्ड हियर, लार्ज सेल्स हैं, उनमें बहुत मोस्टली जो एरिया है अनस्टेन्ड है, बहुत पतली सी रिम है, सो सीवियर IDA में हो सकता है या फिर थैलेसीमिया में। नेक्स्ट वी कम टू स्टोमेटोसाइट में, स्टोमेटोसाइट्स में जो स्टोमा का मतलब होता है माउथ लाइक। सो इफ यू लुक एट दिस पिक्चर्स, दे आर ऑल, इट लुक्स लाइक, अब ये सेंट्रल पैलर एरिया तो रहा ही नहीं है इसमें जो नॉर्मल RBC में होता है, ऐसे माउथ लाइक बन गया, स्टोमा लाइक। सो दीज आर रेड सेल्स विद बायलेटरल कनकेव एरिया, विद सेंट्रल बाइकनकेव एरिया अपेयरिंग स्लिट लाइक, माउथ लाइक इन ड्राइड फिल्म्स. In wet films it may appear as cup shapes. So this can be an artifact as well. हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस भी एक कंडीशन है, उसमें मिल सकता है, या साउथ ईस्ट एशियन वेलोसाइटोसिस, लिवर डिजीज और एल्कोहलिज्म में भी. कमिंग टू सिकल सेल्स डिजीज, दिस यू मस्ट नो अबाउट ऑलरेडी. ये मार्क जो है सेल्स आर सिकल, बोल शेप्ड या क्रेसेंट शेप्ड. जो होमोजाइगस पेशेंट है फॉर HBS सिकल सेल पेशेंट्स, उनमें मिलता है. यूजली दीज आर एब्सेंट इन नियोनेट्स एंड रेयर इन पेशेंट्स विद हाई HbF परसेंटेज. Coming to teardrop cells, classically they are present in macrocytic anemia, megaloblastic anemia. They are also known as dacrocytes. So if you look at these cells, ऐसे teardrop की तरह निकल रहे हैं, है ना? You've read about this. Megaloblastic anemia, but again दूसरे तरह के एनीमियाज में मिल सकता है, सीवियर IDA में myelofibrosis, myelothysic anemias and myelodysplastic syndromes. Now coming to the arrangement of RBCs, whether it is abnormal. So abnormal arrangement, that means rouleau formation या फिर auto agglutination. Now rouleau formation is like stack of coins. So alignment of RBCs on top of each other as if they are stack of coins. If you look at this picture, right? Classically occurs in plasma cell dyscrasias, which is your multiple myeloma, but can also occur in Waldenstrom macroglobulinemia and hypergammaglobulinemia and hyperfibrogenemia. तो पहले 3 जो disorders हैं वो basically immunoglobulin related disorders हैं, तो excessive production of immunoglobulin हो रहा है. So multiple myeloma, Waldenstrom macroglobulinemia and hypergammaglobulinemia and also hyperfibrogenemia. Now coming to autoagglutination, it is more irregular and rounder clumping than linear rouleau. If you look at this picture, मतलब ये उबड़े खुबड़े एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, मतलब एक क्लम्प की तरह है. दिस इज मोर लाइक अ क्लम्प, राइट. एक स्टैक ऑफ कॉइन तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट बेसिकली कोल्ड एग्लूटिनेशन डिजीज के साथ एसोसिएटेड है. इसकी सारी कॉजेज ऑटो एग्लूटिनेशन की सारी कॉजेज ऑटो इम्यून ही होंगी, बट क्लासिकली कोल्ड एग्लूटिनेशन डिजीज और anti-RBC एंटीबॉडी भी हो सकती है, या फिर ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में मिल सकता है. नाउ कमिंग टू इमेच्योर RBCs, वो हमारे पॉलीक्रोमेटिक RBCs हो सकते हैं, न्यूक्लिएटेड RBCs हो सकते हैं. पॉलीक्रोमेटिक RBCs बेसिकली मीन्स कि RBCs थोड़े यंग हैं, प्रिकर्सर सेल्स हैं, तो उनमें अभी हीमोग्लोबिनाइज्ड नहीं हुए हैं पूरे, तो अभी भी थोड़ा ब्लूइश ग्रे टिंट है, ठीक है. तो इसलिए वो रेमिनेंट ऑफ RNA होता है बेसिकली उनमें अभी भी, क्योंकि हमें पता है कि एक मेच्योर RNA में मेच्योर RBC में कोई RNA DNA कंटेंट थोड़ी होता है, बट ये थोड़े यंग वाले RBCs हैं, उनमें थोड़ा RNA का रेमिनेंट बच गया है, इसलिए अभी थोड़ी सी ब्लूइश है. इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर, and they represent reticulocytes when they are stained with supravital stain के अंदर you will count them as reticulocytes only. They are larger usually than normal cells and they indicate कि active erythropoiesis हो रहा है बॉडी में, and उसकी एग्जाम्पल हो सकती है hemolytic anemia. उसमें पेशेंट ज़्यादा बना रहा है, erythropoiesis हो रहा है, और acute blood loss.
और नाउ कमिंग टू न्यूक्लिएटेड आरबीसी विच इज़ यूजुअली अ प्रिकर्सर, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता है, बहुत क्लियरली नाम में ही है न्यूक्लिएटेड आरबीसी, एंड इट इज़ जस्ट रिलीज्ड प्रीमेच्योरली बिकॉज जो न्यूक्लिएटेड आरबीसी है इसका मतलब जो उसके प्रिकर्सर है वो बोन मैरो से ही आए हैं, सारे सेल्स बोन मैरो से तो आ रहे हैं, बट ये इमेच्योर वाले सेल्स थोड़ी जल्दी आ गए हैं मेच्योर होने से पहले। कॉर्ड ब्लड ऑफ न्यू बॉर्न्स में तो ये नॉर्मली भी मिल जाता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी इज अ फेयरली कॉमन फाइंडिंग इन न्यू बॉर्न्स, बट हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में मिलता है, हीमोलिटिक अनीमियाज में न्यूक्लिएटेड आरबीसीज मिलते हैं, ल्यूकीमियाज में भी मिल सकते हैं, माइलोफाइब्रोसिस और माइलोथिसिक अनीमियाज में भी, एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज को काउंट करना ज़रूरी होता है अगर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं आपको। नाउ कमिंग टू रेड सेल इंक्लूजन्स, so we have basophilic stippling which is RNA remnant, Howell jelly body DNA remnant, HEINZ bodies denatured hemoglobin, and Pappenheimer bodies iron, CABOT ring mitotic spindle remnants. Coming to basophilic stippling also known as punctate basophilia, punctate का मतलब pointed है, numerous basophilic granules पड़ी हैं RBC में RNA remnant की वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर क्लासिकली हमें पता है ये हैवी मेटल पॉइजनिंग और कौन सी वाली लेड पॉइजनिंग में मिलते हैं, बट अगर एरिथ्रोपोइसिस खराब है तो उसमें भी मिल सकते हैं जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या थैलेसीमिया। Now coming to Howell jolly bodies, these are small round bodies composed of DNA. So RBCs में एक सिंगल होती हैं Howell jolly bodies और एक पेरिफेरी पे होती हैं। जो पाइपनहाइमर बॉडीज़ है ना वो मल्टीपल भी हो मतलब सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं, वो भी पेरिफेरी पे होती हैं और वो थोड़ी छोटी होती है इससे। एंड अगेन ये हमेशा स्प्लीन के कुछ डिसऑर्डर्स में मिलेगा, पोस्टस्प्लेनेक्टमी, फंक्शनल एस्प्लीनिया और स्प्लीनिक एट्रोफी में। फिर आती पाइपनहाइमर बॉडी स्मॉल, सिंगल और मल्टीपल, अगेन पेरिफेरल साइटेड ही हैं, ऑलमोस्ट ब्लैक हो जाती हैं, ये स्मॉलर होती हैं हॉवल जॉली से, एंड वो जो बनी थी हमारे डीएनए की बनी थी हॉवल जॉली बॉडीज़, एंड पाइपनहाइमर हीमोसिड्रिन आयरन की बनी हुई हैं, तो पर्न स्टेन से इनको कन्फर्म भी किया जा सकता है। सिड्रोब्लास्टिक एरिथ्रोपोइसिस में मिलता है और हाइपोस्प्लेनिज्म में मिलता है। सिड्रो इज रिलेशन टू आयरन, जस्ट रिमेंबर दैट, तो उससे याद रखना कि इसलिए पाइपनहाइमर बॉडीज उसमें मिल सकती हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमियाज में। हॉवल रिमेंबर बेसोफिलिक स्टिपलिंग वाज आरएनए का रेमिनेंट बचना, हॉवल जेली बॉडी इज डीएनए का रेमिनेंट बचना स्प्लीन के डिसऑर्डर्स में, और पाइपनहाइमर बॉडीज इज आयरन का कुछ प्रॉब्लम, आयरन की इंक्लूजन बन जाती हैं आरबीसी के अंदर, एंड यूजली सिड्रोब्लास्टिक एनीमियाज में पर्ल स्टेन से कंफर्म भी कर सकते हैं। अब आती है हाइंज बॉडी। हाइंज बॉडी नॉर्मल, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये रोमनॉफ्स्की स्टेन्स है, और रोमनॉफ्स्की स्टेन की जो एग्जांपल है क्लासिक वो है लीशमैन स्टेन, जिम्जा वगैरह सब रोमनॉफ्स्की की एग्जांपल है, तो इसमें हमने लीशमैन लगाई हुई है, तो उसमें हम आपको हीन्स बॉडी पर नहीं दिख सकती, हीन्स बॉडी आपको सुप्रावाइटल स्टेन्स में ही दिखती हैं। Purple blue large single या multiple inclusions attached to the inner surface of the RBC. They represent unstable hemoglobins या normal hemoglobin भी हो सकती है बट वो precipitate कर गई है post-splenectomy patients में या फिर oxidative stress के अंदर भी। G6PD की क्लासिक एग्जाम्पल है कि हाइंस बॉडी मिलना, और कभी कभी फिर पिटिंग एक्शन होता है ना आरबीसी का, इसी पे G6PD डेफिशिएंसी में हाइंस बॉडी मिली आरबीसी के सरफेस पे, तो फिर स्प्लीन ने आके पिटिंग एक्शन किया, और फिर क्या मिलता है पिटिंग एक्शन से कैरेटोसाइट्स जो हमने पीछे पढ़े थे। नेक्स्ट इज योर कैबोट रिंग, दीज आर रिंग शेप्ड 8 फिगर ऑफ 8 या लूप शेप्ड हैं, रेडिश होती हैं यूजली राइट स्टेन के साथ, और कोई इनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत 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 रेयर फाइंडिंग है प्रोनीशियस एनीमिया और लेड पॉइजनिंग में। नाउ कमिंग टू द एब्नॉर्मलिटीज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। When we come to WBCs, we have granulocytes and agranulocytes, right? And granulocytes are your neutrophils, eosinophils and basophils, and agranulocytes are lymphocytes and monocytes. This is just a brief picture, just wanting to summarize all of them. Look at this, the cell which is labeled neutrophil. So you can tell that it has fine granules, pinkish cytoplasm, and a dark purple to blue to dark purple segmented nucleus. Now, if you look at the cell just above it, which is eosinophil, it has reddish granules. It is usually bilobed in such a way that it is called bispectacled appearance, as if it has spexes, but it can be trilobed as well. But the characteristic feature is the granules, which are reddish to orange color. If you look just below it, we have another granulocyte, which is basophils, which has coarse bluish granules, so much so that they obscure the nucleus. And if you look at towards the left, we have both the agranulocyte, lymphocyte and monocyte.
So lymphocytes have high nucleocytoplasmic ratio. So this is, we are seeing a small lymphocyte. So lymphocyte can be small as well as large, and they have a purple nucleus and dense chromatin, and there is a narrow light blue rim of the cytoplasm. There's a band form as well. We'll see about it in detail. Now we are going to discuss each of these cells one by one. Firstly, we have neutrophils. So we have a central nucleus with 2 to 5 lobes and a deep purplish blue. The nucleus is deep purplish blue and pink cytoplasm. The granules are of 2 types. It has primary eosinophilic granules and the specific neutrophilic granules, which are secondary. Now, the maturation of neutrophils happens from blasts. So we have myelocyte, promyelocyte, myelocyte, metamyelocyte, band form, and neutrophils. These cells most likely you will give in the DLC of a CML. So if you look at this picture here, so first we have a myeloblast, and then we have a promyelocyte, and then myelocyte, and then metamyelocyte and band form, and then we have your typical segmented neutrophils. So the very first thing that you see is decrease in size of the cell, decrease in nucleus of the cell, and the granules are becoming less and less coarse. I know the picture is not that clear. And blast and promyelocyte usually have nucleoli. Myelocyte also may or may not have nucleoli, but blast and promyelocyte usually have nucleoli within them. And metamyelocyte has a very characteristic shape of the nucleus as well. Okay, so just this table is summarizing them. So myeloblast is a large immature cell with dispersed chromatin 2 to 5 nucleoli, and it has a scanty light blue cytoplasm. Then we have the promyelocyte, which is again similar to myeloblast, and it is slightly eccentric but has granules. And again, promyelocyte is the largest cell of this series. And then we have myelocyte, which is condensed chromatin, but it usually does not have any nucleoli. And then metamyelocyte, again, like I said, a characteristic indented or kidney shaped or V-shaped nuclei, and there may be some clumping of the chromatin. Band form, again, U-shaped band like nucleus with heavily clumped chromatin. And then we have your mature neutrophil. And if you look at the granules, so the myeloblast did have eosinophilic granules, scanty in the scanty cytoplasm, as well as promyelocyte had those granules. But specific granules are predominating from myelocyte. Myelocyte के level पे specific जो secondary granules हैं, so eosinophilic are primary granules, but secondary जो specific neutrophilic granules हैं, वो are starting to come at the myelocyte stage. Now coming to the next cell, which is lymphocyte. Like I said, they can be small lymphocyte and large granular lymphocyte. So here the NC ratio is much higher. They're much better visible under the light microscopy. The nucleus is purple and there's a densely packed chromatin, and the cytoplasm forms a narrow light blue rim. Eosinophils 8 to 10 micron meter in diameter, and they are bilobed. They can have more than 2 lobes as well. It's a bispectacled appearance. They have large crystalloid orangish or reddish reddish orange granules. Sometimes they can give a grayish appearance as well. This is just a brief enumeration of all types of granules or metabolites which are stored in the eosinophilic cytoplasm. Next, we come to the monocyte. It is a large cell. Among all the 5 WBCs, monocyte is the largest. It also, so eosinophil and basophil have a maturation sequence similar to neutrophil, but monocyte has its own maturation sequence, which is monoblast, promonocyte, and monocyte. Monocytes are the largest white blood cell in the peripheral blood, 15 to 20 micron, with irregular shape. And again, the nucleus is kidney shaped, and it has a fine reticulochromatin, and it has a ground glass appearance wala cytoplasm, which is abundant, and it might contain granules, and often it also contains vacuoles. Lastly, we have your basophils. Basophils are 9 to 12 micron in size. Cytoplasm is filled with deep blue granules, and they obscure the nucleus, and nucleus is usually segmented into 2 to 3 lobes. Now coming to
abnormal things that you can see in WBCs. First, we are going towards granules. So there is something called as toxic granulation कि जब भी sepsis का patient होता है, जब में WBC count patient में बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, तो उसके WBCs में toxic granulation आता है neutrophils में. तो वो basically increase in the staining density and number of granules seen with bacterial infections and other inflammation. But हाँ, colony stimulating factors अगर granulocyte वाला दिया है, या फिर anaplastic anemias, उनमें भी ये मिल सकता है. Then there is something called as hypogranular या agranular neutrophils, वो myelodysplastic syndrome या AML में मिलते हैं. फिर आती है एल्डरली एनोमली. इसमें लार्ज डिस्क्रीट डीप रेड ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, पर इसमें फंक्शन न्यूट्रोफिल का नॉर्मल है, पर रेड ग्रैन्यूल्स, डीप रेड लार्ज ग्रैन्यूल्स मिलते हैं और ऑब्स्क्योर कर सकते हैं न्यूक्लियस को. फिर चिडाइक हेगेशी ग्रैन्यूल्स हैं, ये फंक्शनल डिफेक्ट है न्यूट्रोफिल्स का, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, उसमें मिलते हैं. अगेन दे आर जायंट बट थोड़े एजुरोफिलिक ही हैं. ऑल्सो सीन इन अदर ल्यूकोसाइट्स, मतलब दूसरे ल्यूकोसाइट में मिलते हैं. बेसिकली न्यूट्रोफिल्स में फंक्शनल डिफेक्ट होता है. इसमें न्यूट्रोफिल्स अपना वो NADPH ऑक्सीडेज वाला जो पूरा पाथवा है, उसकी वजह से फेगोसाइटोसिस एबनॉर्मल होता है इसमें. डोले बॉडीज, दीज आर स्मॉल राउंड पेल ओवल ब्लू स्ट्रक्चर, पेरीफेरी पे होते हैं न्यूट्रोफिल के, एंड बेसिकली राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से है और जो डोले बॉडी बनी है. एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, GCSF या प्रेगनेंसी में भी मिल सकता है. फिर है मेहगेलिन में ये याद रखना, इसमें जॉइंट प्लेटलेट मिलती हैं. ये देखो जॉइंट प्लेटलेट्स जो पॉइंट किया ना, रेड एरो वाला वो जॉइंट प्लेटलेट है. तो इसमें सारी टाइप की इंक्लूजन्स आ सकती हैं, और इंक्लूजन्स कैन अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, पर लिम्फोसाइट इसमें नॉर्मल होते हैं मेहगेलिन में. स्मॉल बेसोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, सो रिमेंबर दिस, इंक्लूजन्स लिम्फोसाइट्स नॉर्मल होते हैं और जॉइंट प्लेटलेट्स होते हैं. फिर न्यूट्रोफिल्स में वेक्यूलेशन भी होती है, बट दैट इज यूजली इंडिकेटिंग फेगोसाइटोसिस, तो यूजली सीवियर सेप्सिस में या फिर आर्टिफैक्ट, अगेन EDTA चेंजेस. हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, अगेन presence of neutrophils with 6 or more lobes or the presence of more than 3% of neutrophils with at least 5 lobes, तो इसे राइट शिफ्ट बोला जाता है. सीन इन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, कैरेक्टरिस्टिकली यूरीमिया, साइटोटॉक्सिक ड्रग ट्रीटमेंट, मेथोट्रेक्सेट और हाइड्रोक्सीकार्बामाइड में भी मिल सकता है. पेल्गर ह्यू इज अ बिनाइन एंड इनहेरिटेड कंडीशन, जहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की न्यूक्लियर सेगमेंटेशन नहीं हो पाई. ठीक है, तो ये नॉर्मली भी मिल जाता है कुछ लोगों में, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब पेल्गर ह्यू एनॉमली होती है. ठीक है, तो वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है दूसरी इनहेरिटेड कंडीशन से, पर ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स में या AML विद डिस्प्लास्टिक मैच्योरेशन या कभी कभी CML में मिलता है. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट प्लेटलेट्स. So usually the size of the platelets is 1 to 3 micron and normal count is considered 1.5 to 4.5 lakhs per microliter. These are non-nucleated cells, right? मेगाकैरियोसाइट से बनते हैं प्लेटलेट्स, बट मेगाकैरियोसाइट्स आपकी बोन मैरो में हैं. जब भी हिमेटोपोइटिक एलिमेंट है उसका एविडेंस इज मेगाकैरियोसाइट्स. दैट मीन्स आपकी बोन मैरो नॉर्मली चल रही है. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, न्यूबॉर्न है या इन्फेंट है या फिर इन यूट्रो कोई एम्ब्रियो है, उसमें फीटस है, तो उसमें आपने अगर देखना है कि क्योंकि उसमें तो हिमेटोपोइसिस दूसरे ऑर्गन्स में भी होता है ना, स्प्लीन में, योक सैक में भी तो होता है और लिवर में भी तो होता है, तो उनमें हिमेटोपोइसिस का जो एविडेंस है वो किससे मिलेगा? मेगाकैरियोसाइट्स की प्रेजेंस से. हैं जो क्लासिक हैं आपको याद रखने हैं, मेहगेलिन एनॉमली, बर्नार्ड सॉलियर सिंड्रोम, एल्पॉट सिंड्रोम एंड स्टोरेज पूल सिंड्रोम. मेहगेली तो डिस्कसिंग 3 हेमोपैरासाइट्स, मलेरिया, फाइलेरिया एंड लीशमैनिया. वी नो कि कॉजेटिव एजेंट मलेरिया का क्या है? प्लाज्मोडियम. उसकी 4 स्पीसीज हैं, फेल्सीपेरम, वाइवैक्स, ओवेल एंड मलेरिया. नाउ प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में इन्फेक्टेड RBC का साइज तो नॉर्मल रहता है, बट इसमें जो मेन चीज़ है ना वो गेमेटोसाइट्स है. फ्यू ये जो मैंने पिक्चर पॉइंट कर रही हूँ, ये जो पॉइंटेड है ना, जिसके ऊपर रेड एरो वाली जो पिक्चर है, उसमें आपको गेमेटोसाइट दिख रहा है, बनाना शेप्ड का, मेच्योर है वो. ठीक है, और इमेच्योर भी आपको दिख रहा है. तो ये याद रखना है कि ये मेच्योर गेमेटोसाइट्स हैं फेल्सीपेरम के, और ये केसेस देखे भी गए हैं. अब इधर लेफ्ट वाली पिक्चर में, ब्लू एरो वाली पिक्चर्स में देखोगे तो डबल क्रोमैटिन डॉट्स दिख रही हैं. इन्हें एकॉल फॉर्म्स भी बोला जाता है. तो बेसिकली मल्टीपल इन्फेक्शंस हुई हैं सेम. ये राइट वाली पिक्चर में अगर आप देख रहे हो तो सेम ही सेल में कितनी ज़्यादा मल्टीपल इन्फेक्शंस है, एकॉल फॉर्म्स, मतलब डबल क्रोमैटिन डॉट्स. फिर नीचे ट्रोफोजाइट्स भी मिलता है, पर ये ब्लड में नहीं आता, और शाइजॉन्ट भी होता है इसका. नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म वी हैव इज द वाइवैक्स.
So it can have ring forms, it can have trophozoites, and it can have schizons as well as gametocytes. So the thing that you have to remember is that it can have schizons, जो multiple dot like structures हैं, 12 to 24 merozoites हैं. It can also have trophozoites, and cell की ना shape खराब हो जाती है, they get deformed, and ये जो Schaffner's dot मिलती हैं schizons में, okay. Next, you have is Plasmodium ovale. Again, the size of the RBC, infected RBC, is increased a little bit, and again, it also has Schaffner's dot like the last one. Okay, so it can have ring forms, the trophozoites, and the schizons. And again, यहाँ पे जो different चीज़ है पिछले वाले से कि इसके schizons में pigment मिलती है, ठीक है. The dark pigment is seen in the schizons of ovale as well as malaria, Plasmodium malaria. So, and of course, gametocytes ये round to oval है. इसमें ring forms and trophozoites हैं and pigmented schizons. So lastly, we have the Plasmodium malaria. It can have a trophozoite of two types. So the compact trophozoite, like everybody else's, and it has a typical band form like trophozoite. And again, they have pigmented schizoid. So merozoites के साथ साथ pigment भी हैं schizoids में, and coarse round pigment के साथ साथ gametocytes हैं. Ovale की भी gametocytes में pigment थी. Next hemopyrosite that we have is leishmania. We know that it is the vector for it is your female sandfly or the phlebotomus. Its other name is phlebotomus. There are two forms of the parasite, a mastigote, which is in humans, and there is a promastigote form, which is in the vector. It can occur in three forms: visceral leishmaniasis, which is Kala Azar, and cutaneous leishmaniasis, and mucocutaneous leishmaniasis. Okay, so how does leishmaniasis look like? We know that LD bodies are characteristic features of this is the amastigate form, Leishman Donovan bodies, which are seen, and the classic differential for these on cytology, whether it is bone marrow or your MGG, is histoplasma capsulatum. Now let's look at both of them. Let's look at the differences between the LD bodies or amastigate forms of the leishmania as well as the histoplasma. So these are can be intercellular as well as extracellular, these LD bodies. But histoplasma is a parasite in which these structures are intracellular, and usually histoplasma does not have any background inflammatory cells, but it does have increased inflammatory cells. Leishmania does have increased inflammatory cells, and especially specifically plasma cells, which histoplasma does not have. And it has a kinetoplast in it, but it does not. Histoplasma does not, and it has a characteristic double dot appearance, which is the appearance of the nucleus is this. But histoplasma is a pass positive organism, and it has basophilic crescent shaped nucleus. And I know that these pictures are not very clear. These differences are just for you to remember that the important DD for this is histoplasma. Now coming to the next organism, which is your filaria. The definitive host for this is human, but there are intermediate hosts जो कि female culex या anopheles और Aedes aegypti, और infected form जो इसकी infective form है वो है larva, जो कि मस्कीटो के अंदर होता है. इन पीबीएस ब्लड में आपको माइक्रोफैलेरिया मिलता है, लार्वा थोड़ी मिलेगा हमें, माइक्रोफैलेरिया मिल रहा है. नाउ लुक एट दिस लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर. ये तो इतना यूनिक सा स्ट्रक्चर है, यू विल बी एबल टू टेल. Lastly, a very important thing is the EDTA changes. That is prolonged EDTA में जब ब्लड पड़ा रहता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज वी डिस्कस्ड वेरियस थिंग्स, वेरियस एंटिटीज which are the differential diagnosis for that is EDTA artifact, right? So for example RBCs का क्रीनेटेड होना या स्फीरोसिटिक चेंज आनी. तो रिमेंबर इकाइनोसाइट्स हमने पढ़े थे, तो वो आपने देखा भी होगा कि प्रोलॉन्ग्ड RBCs जब पड़े रहते हैं तो उनमें इकाइनोसाइट्स आ जाते हैं. तो क्रीनेशन होना एंड इकाइनोसाइट्स आना, स्फीरोसिटिक चेंज आना, दैट इज EDTA चेंजेस. न्यूट्रोफिल्स में सेपरेशन होना न्यूक्लियर लोब्स का, लॉस ऑफ ग्रैन्यूल्स और इवन वेक्यूलेशन का आ जाना साइटोप्लाज्म में. मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स में हैव इरेगुलर लोबुलेशन ऑफ देयर न्यूक्लियाई एंड वेक्यूलेशन में occur again, and the platelets can disintegrate. And again, tests, well, hematological tests can be abnormal as well as a result of prolonged EDTA. Packed cell volume and mean cell volume might increase because the red cell gets swollen after a while, and osmotic fragility will increase, and TLC and platelet count will slowly decrease because these cells start getting disintegrated.